Okay, we are back. We are back with the stream. I guess ये थोड़ा better high quality रहेगा. Much better. I need to check in my phone. Yes, I think this is looking better. Now looking actual malai. Nice. We are back at HD quality. ये So जैसा मैं बोल रहा था, we are adding a touch controller into the game, and we are using the new input system, and this is how we are gonna do it. एक बेस क्लास बना दिया टच हैंडलर बोल के, और उसके अंदर वी आर गोना रजिस्टर ऑल दी इवेंट्स, बेसिकली touch events. I don't want to rewrite this again and again for every kind of input basically. तो एक बार लिख दे के मैं इसमें ही मालूम हो जाता मेरे को. And then what I will do is start input में I'll get a log here and say start finger finger dot index id finger id index ही है, इसमें id नहीं है. आगे index finger dot index at finger dot screen position. सिमिलर वे में अपन इसको मूव इनपुट पे भी रखेंगे, एंड देन वी विल आल्सो पुट इट हियर स्टार्ट मूव एंड एंड. बिकॉज वी आर यूजिंग न्यू इनपुट सिस्टम, अपने को थोड़ा अलग यूज़ करना पड़ता. ऑल्सो नो थंबनेल. यस, आई एम अवेयर दैट देयर इज नो थंबनेल. आई वाज टू लेजी. आई वाज टू लेजी टू पुट अ थंबनेल अभी के लिए. वो थोड़ा टाइम के बाद स्ट्रीम करने के बाद उन्हें ऑटोमेटिकली एक थंबनेल डाल देता वहाँ पर कुछ तो भी. अभी तो खाली बस नो बी एस बोल के आ रहा था. हाँ पता है. चलेगा. आई डोंट नो, आई एम जस्ट टाइम पास के लिए कर रहा हूँ मैं ये बेसिकली. ओके. तो ये इवेंट्स हैंडल कर रहा. एंड आई एक्चुअली मैं सोच मतलब मेरे को पूरे चीज़ें चाहिए नहीं, फिंगर टच इवेंट के ब्ला 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 ब्ला. इतने वो सी चीज़ आ रहे थे इसके अंदर. इज एक्टिव, स्क्रीन पोजीशन, लास्ट टच, करंट टच, फुल हिस्ट्री ऑफ द टच. तो टच का फेस कौन सा है, टच फेस दैट बिगिन मूव्ड. प्राइवेट स्टैटिक पुट ब्ला 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 ब्ला. फाइनल टच ये सब तो नहीं है. इंटरनल टच हिस्ट्री, तो ये सब चीज़ों की मेरे को ज़रूरत नहीं है. तो इसलिए ये अपन खाली बस ये यूज़ करेंगे. एंड वील एक्चुअली हैव अ पब्लिक, let's see, using system dot reactive नहीं है अपने पास. ओके. पब्लिक एक्शन vector 2 on start touch, on end touch,
on touch move, on touch start, on move touch, on start touch dot invoke finger dot screen position, on move touch invoke dot finger position, and on end touch invoke finger dot blah blah blah. So we are having three public unity action, pre-public actions which I can register to anywhere to get access to this touches, and this will make sure कि मैं touch handler का कोड एक जगह रखूँगा और बाकी का कोड दूसरी जगह रखूँगा. Let's jump back to unity, and ये character के अंदर अपन एक empty प्लेयर डालेंगे. एक्चुअली इसको यहाँ डालेंगे कैरेक्टर नाइट ब्ला 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 विजुअल, और इसके अंदर टच हैंडलर डाल देंगे. सो होपफुली अभी नहीं, एक्चुअली अभी आई थिंक टचेस काम नहीं करेंगे. ओ कर रहे. यस इट इज ओके. सो टच स्टार्ट, टच एंड, टच स्टार्ट, moved, blah blah blah. We are getting all the touch events using the new input system, which is what we wanted. Step 1 done. यहाँ पर एक लोकल लॉग है टू नो विच, मतलब वही लोकली लॉग करने के लिए चीज़ों को. आई कैन डिसेबल दिस एंड देन फिर भी वहाँ नहीं होता, लॉग्स बंद हो जाते. ठीक है, फर्स्ट स्टेप डन. टच इनपुट आ रहा. टच इनपुट से अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, क्योंकि वो प्लेयर के अंदर नहीं रहना चाहिए एक्चुअली. भाई लेट्स जस्ट ऐड अ क्यूब. So the game that I want to make, उसके अंदर बेसिकली ऐसा क्यूब्स रहते या जगह रहती और प्लेयर थराव रहता. लेट्स ऐड यहाँ पर एक सिने मशीन, सिने मशीन फॉलो कैमरा, और टारगेट लुक एट वुड बी प्लेयर. रोटेशन कंपोजिशन नो. और इसको अपन यहाँ जाके वर्ल्ड स्पेस नहीं, लेजी फॉलो वर्ल्ड स्पेस इच ऑफसेट फॉलो नहीं, पोजीशन कंपोजिशन होना अपने को. यस, एंड इसके अंदर वेयर कैन आई शो गाइडलाइंस, गेम गाइडलाइंस, एक्टिव, पैसिव, इंटरैक्टिव. इंटरैक्टिव मे बी गेम व्यू में आता. यस. सो अपने को स्क्रीन का पोजीशन में अपने को थोड़ा ऑफसेट होना ऐसा, और थोड़ा ऑफसेट होना ऐसा. और अपन क्या करेंगे, बेसिकली इसको डिसेबल कर देंगे. प्लेयर टक 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 आगे जाता, फिर इसको जो है सो वापस इनेबल कर देंगे उतना ही. And we'll also actually use follow cam and duplicate this and
स्टैटिक क्या? ये इसलिए क्योंकि दो कैमरास के बीच में अपने को वो करना है, स्मूथली लव करना है, इसलिए अभी तो स्टैटिक कैम बंद कर देंगे और फॉलो कैम यूज़ करेंगे. So the idea is we will generate cubes, whatever. एक क्यूब यहाँ है, दूसरा क्यूब वहाँ है. थोड़ा साइजिंग का देखना पड़ता मेरे को. ने भी थोड़ा पीछे कर देंगे और लोग को, और कैमरा तो फॉलो कराना पेन रहा. जेड पोजीशन में नहीं, जेड नहीं तो एक्स पोजीशन. 2015 पता नहीं, 5. आई एम अ बिट कंफ्यूज्ड. ठीक है, लेट्स जस्ट ऐड बेस गेम गेम प्ले बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बेस एबिलिटी बोलेंगे, नहीं, बेस गेम कंट्रोल, बेस एबिलिटी, एक्शन, एक्शन, बेस एक्शन. द आइडिया इज मेरे को एक बेस एक्शन बनाऊंगा एंड फिर उसके डिराइव्ड एक्शंस रहेंगे, in which I will write the code for what that action will do. For example, build a ladder or swing. So I'm moving again it to namespace, no bs game public, public abstract class. So abstract class basically कैसा रहते हैं is where you write the definitions of the classes that you want to derive. What is the purpose of abstract class? Basic अगर सोच रहे तो abstract class we are very helpful if you want to have um, how can I explain this, a base class which will have functions that will make sure ki they are being called, if that makes sense. So for example, I will have a public abstract void on execute 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 oh fuck it, on perform. So this is a base abstract class again जो मैं करना चाह रहा हूँ, and then I can also have public virtual void where I can also have the implementation of some function. So अभी example के लिए अपन एक देंगे uh, 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 log start. We will derive it from bro mono again. So ये इसके अंदर we can also define what this function is. So we are just defining uh, log action is
accessible from everywhere. This will basically give me यहाँ पर एक name. I don't have to bar bar write that. And actually if I go into the utilities, so there are multiple logging utilities यहाँ पर with tags, tag 1, tag 2 and message. So tag 1, tag 2, message, tag message. So ये automatically tagging कर देता. And I also have this over here, public static void log this unity game object बोल के ऐसा. तो अगर इसका मतलब ये रहा कि अपने पास कोई भी आई कैन बेसिकली डू समथिंग लाइक कहीं से भी अगर एक यूनिटी ऑब्जेक्ट रहा तो आई कैन जस्ट डू दिस डॉट लॉग ऐसा. इवन इफ इट्स अ मोनो बिहेवियर विच आई डोंट हैव एट द मोमेंट. या इसको मैं चेंज कर दिया, देखो मोनो भी सॉरी मोनो बिहेवियर. so this function I can just do this dot log instead of debug dot log. तो एवरीथिंग इज़ बेसिकली लॉगबल इसके तरीके से. और इसकी वजह से मेरे को ये भी मालूम हो जाता कि कहाँ से कहाँ कहाँ लॉग्स पड़े हुए हैं. ये काफ़ी हेल्पफुल रहता अगर आप गेम डेवलप कर रहे और आपको बिल्ड में आपको लॉग्स नहीं होना. उस केस में आप हैश टैग इफ यूनिटी एडिटर बोल के यहाँ डाल दे सकते हैं. एंड देन ओनली इन एडिटर द लॉग्स विल बी देयर. इन प्रोडक्शन लॉग्स वोंट बी देयर. It is basically a good practice to remove logs from production, but Bromo no. Having too many logs is also not good. Action is starting. तो इसको मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? Base action abstract on perform and virtual void log start बोल के इसलिए कर रहा हूँ. Then I can have derived actions which will always have these on perform and log start functions in them. A very good example is guns. Gun systems में ऐसा यूज़ करते basically shotgun के लिए अलग logic होना और sniper के लिए अलग logic होना. But you want all of the guns to have the same firing and all those kind of things. तो आप थोड़ी जो है सो हर चीज़ मैन्युअली करेंगे इसलिए. so यहाँ पर एक so what I will do is build BRIDG bridge action.
तो ऐसा करके अपन टच स्टार्ट और टच एंड का डाल दिए player handler में, and the base action that we want to perform, we will just do current action dot perform. और यहाँ पर अपन रखेंगे current action dot on finish, like this. Very abstract code, but this level of abstraction will help us keep the code solid. प्लेयर के अंदर अपन एक टच हैंडलर, प्लेयर हैंडलर भी डाल देंगे, और बेस एक्शन, बिल्ट एक्शन, ऐसा। ऐसा तो बेसिकली हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड करके रखें यहाँ पर। दिस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर taking touches and giving touches. This is responsible for performing an action, and this is bridging between this and this. तो अभी तो कुछ होगा नहीं, but we will see some console logs. That is enough अभी के लिए. No, we are not seeing any console logs. Maybe अपन सिमुलेटर में गए तो yes, सिमुलेटर में आता हो. So we can see start action is starting, end action is done. Like this. तो अपने को स्टार्ट इनपुट भी आ जा रहा और एंड भी आ जा रहा, और अपने को स्टार्ट पे एक्शन इज स्टार्टिंग इज आ रहा और एक्शन इज डन बोल के आ रहा, लाइक दिस. सो वी कैन ऑल्सो नो कि ओके दिस इज गिविंग अस दिस logs and this is giving us this logs. So yes, so far so good. Now actual building of the things. अब वो करने के लिए जो है सो तरीके दो तीन है. I'm thinking the most visually pleasing and what do you say, feel and good किस में अच्छा रहता. Like पोंग पोंग, like टक 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 बोल की आवाज़ आ सकती है. टोंग 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 आवाज़ आती, कुछ एक आवाज़ आती, आवाज़ के साथ वो ग्रो होता. That is what I want to do. It grows in the y direction basically. ऐसा ऊपर. उसके लिए अपन ऑब्जेक्ट पूल यूज़ करेंगे क्या, ज़रूरत पड़ती क्या ऑब्जेक्ट पूलिंग की. यस, ऑब्जेक्ट पूलिंग कैन बी यूज्ड बिकॉज वी डोंट वांट टू स्पॉन एंड despawn it all the time. Pool manager, pool manager. Okay, this is not the pool that I want, or is it the pool that I want? Mm, 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 mm. It is the pool that I want, but not with the things that I want in it. So let me find
AVH, AVH है ना, not AVH, it is Lawn versus Musk, Rump versus Lawn, Rumvy Lawn, Rumpy Lawn, Rumpy Lawn, assets, Navies, scripts, editor, pool manager, editor, pool manager, editor, and then pool manager, editor. It is the thing that I want, but उसमें ये editor रहता तो वो ज़रूरी था. Editor, yes. I mean this is basically खाली pools के लिए है, और last में मैं करना चाह रहा हूँ. Just repaint it. Yep. This is what I say, group pool basically. Poolable group pool. There's just one pool and there are multiple pools in this. Um, so it's right now आप इसके अंदर कुछ भी नहीं है एक्टिव, और एक्चुअली मैं डीबग करूँगा और इसको ज़ीरो कर दूँगा तो नॉर्मल में जाएगा. नो pools created, yes, yet use prewarm or spawn to create a pool. So bridge action, public game object, prefab. Let's just do this, and अभी के लिए just public void virtual base action, public in with setup. Here I D just bridges. प्रीवॉर्म 5 की ज़रूरत नहीं है, प्रीवॉर्म 4 3 भी चलता. Let's make a cube again. और जी में सब कुछ 0 0 पेज रखना चाह रहा हूँ मैं.
ज़्यादा कुछ टंटा नहीं। बेस में लेट्स ऐड अ फोल्डर कॉल्ड materials, and let's create a material called bridge, called bridge material will be black. What I want to do is इसका पिवट और नीचे करना चाह रहा हूँ। यूनिटी में कर सकते हैं बट उसके लिए मेरे को फ्लो बिल्डर डालना पड़ता, तो मैं डायरेक्टली करना नहीं चाह रहा हूँ। मैं इसमें एक एम्प्टी डाल देता हूँ और इसको रख देता हूँ बी और आई डी जी ई ब्रिज। उसको मैं यहाँ डाल देंगे ऐसा 0.5, that would be exactly there, and then we will keep this bridge ऐसा और इसको अपन ऐसा कर देंगे। Yep, that is exactly how I want it. उसको शुरू में 0 रहेगा, the fuck। टप। Let's create अभी के लिए तो 1 रख देंगे। इसके अंदर एक प्री फैब्स बोल के फोल्डर बना देंगे, प्री फैस। put the bridge here, and we will put the prefab here। तो अगर अब मैं प्ले करा इंटरेस्टिंग राइट, कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि अपन अपना सेटअप तो कॉल ही नहीं करे। सो यहाँ पर ऑन एनेबल, ओ शिट एक और एक चीज़ भूल गया मैं, प्राइवेट वॉइड ऑन डिसेबल टच डॉट ऑन एंड टच डॉट ऑन स्टार्ट टच। एनेबल हो गया, डिसेबल भी हो गया, और अपन इसको यहाँ डाल देंगे प्राइवेट वॉइड स्टार्ट में करंट एक्शन
start coroutine. Parent action dot setup. Now जैसे ये स्टार्ट होगा, ये pool manager will be pooling three, I guess, yeah, 3 or 4 bridges like this, 3 bridges like this. So I can use these 3 bridges to spawn and do stuff. So far so good, I guess. Next step would be to twing. उसके लिए भी मेरे को चाहिए कि ये प्लेटफॉर्म जो है ना, प्लेटफॉर्म्स के भी अपने को थोड़े चीज़ें चाहिए वैसे तो। अब ये एक्स डायरेक्शन में 2 है और वाई डायरेक्शन में 6 है, तो वाई डायरेक्शन का तो चलता, उतना फ़र्क नहीं पड़ता, वो एक्स डायरेक्शन का ज़्यादा परवाह है। तो एक्स डायरेक्शन में अगर 2 है तो इसका मिडल वुड बी एट 1। सो करंट प्लेटफॉर्म पे आने के लिए इसको करने के 2-3 तरीके हैं वैसे तो। आई कैन डू इट इन मल्टीपल वेज अगेन। एवरी solution has multiple ways of doing it. For now, let's just do it in we want that action to be known. The current uh, cube should be known by build action, right? So this is the current build, and then this is the current cube. Let's add another script called platform handler. Platform handler again in the namespace of game. For now, we'll just have a public transform spawn point. This is where the stuff will be spawning from. And build bridge action, we will also have a public platform handler current platform. So on perform we will basically uh, pool manager dot instance dot get item ना preform ना spawn. What we will do is actually यहाँ पर public string pool key actually poolable. I had something, right? Poolable public class pool
item public string group public game object prefab. I will also make it serializable. A public pool item pool manager dot pool item. That is not nice. और इसके अंदर ही actually we'll have a public void preform public prefab public int preform number pool manager dot instance dot preform prefab group preform count. So we will have a pool item BRID which so bridge dot pre public void get public game object get return pool manager dot instance dot spawn public vector 3 was Quaternion rot prefab dot pos dot rot comma group public void return game object and group. Go. Pool manager dot instance dot despawn go comma group. Okay. Bridge action log start public game object ultimate yo yo what's up
on is equals to bridge dot get position would be current platform dot spawn point dot position dot rotation in big 25. In big 25, what do you mean by big 25? अभी के लिए तो खाली ये करेंगे, अभी तो खाली स्पॉन करेंगे ऑन एंड what is the game about? The game is a small hyper casual game where we have to make bridges to cross platforms. The game में अपन जो है सो एक नाइट रहते हैं जिसको फोर्ट में रीच करना है, तो द नेम ऑफ द गेम इज फोर्टनाइट. Yes, I know, very original, too original. I'm making Fortnite. Use Unreal Engine. I hate Unreal. अच्छा, अगर मैं 0.5 ऐसा करा और इसको, ओह ओके. फोर्टनाइट के लिए. फोर्टनाइट. Yes, this is Fortnite. You can see here name F-O-R-T, Fort, K-N-I-G-H-T, night. So I'm making Fortnite, a knight which is trying to get into the fort. Very simple. पता नहीं ये फोर्टनाइट बोल के क्या गेम बना दिए लोग. इतना सिंपल चीज को भी समझने नहीं आती उन लोग को. विदाउट एनी नाइट्स और विदाउट एनी फोर्ट, फोर्टनाइट बोल देते लोग. स्पॉन स्पॉन स्पॉन. ओके. BRODGE, which, because there are no forts and knights in Fortnite, I am making my own Fortnite with fort and knight. Current platform ये है. Yay, it is working. डंडी जो है सो आ रही है, और मैं यहाँ एक्चुअली यहाँ पर एक पूल रखेंगे. पब्लिक पूल इज वेरी
और यहाँ पर डाल देंगे इज वेरी इज इक्वल्स टू फॉल्स। if is not ready, return। दिस विल मेक श्योर कि अपना जो है सो एक्शन रेडी है जब तक परफॉर्म नहीं करना। तो perform is ready is equals to 2। no it will be like walking। ब्रिज बनेगा, ब्रिज बनने के बाद जो नाइट है उन्हें वॉक कर लेते हुए नेक्स्ट उस तक जाएगा। पब्लिक bool is active, spawn is active is equals to true। और इसमें लिख देंगे is active is equals to false। और perform can't I use AP can't I use AI to make this kind of game? Yes, you can use AI if you want to make this kind of game also. And this kind of game is quite easy to make using AI। मैं actually बता दूँ कौन सा गेम बना रहा हूँ मैं, बस 3D में बना रहा हूँ वो वाला गेम। एड्स की माँ की। दिस ये वाला गेम बना रहा हूँ मैं बेसिकली। वेरी सिंपल गेम, वेरी वेरी सिंपल। बट उसको मैं 3D में बना रहा हूँ उतना ही। डंडी है, डंडी भर रही होती और या बट इट्स अ नाइट। यस, फॉर मी इट्स अ नाइट एंड अ फोर्ट। ये है मेरा नाइट भाई साहब। दिस इज द नाइट दैट आई विल हैव। तो एक्चुअली परफॉर्म प्लेटफॉर्म हैंडलर तो एक चीज़ है, बट ब्रिज के अंदर भी अपने को एक कोड लिख सकता हूँ मैं। आई मीन ठीक है, ब्रिज हैंडलर बोल के मार देंगे ना कि BRIDGG ब्रिज हैंड। अब ये इतना सिंपल सा मोबाइल गेम तो भाई खेलना, ये तो इंस्टॉल करके कि खेल ले सकते तुम लोग आराम से। अपने दोस्तों को भी बोल सकते खेलो, ठीक है। ग्रो रेट पब्लिक पब्लिक bool is
ग्रोइंग, अभी के लिए तो इतना इच करेंगे. व्हाट अबाउट दैट इच गेम? या इच गेम मोस्ट प्रॉब्ली ओवर द वीकेंड तक मैं डालूंगा. ये वीकेंड तक, सैटरडे तक डालूंगा मैं उसको. इफ इज ग्रोइंग, ट्रांसफॉर्म द स्केल, लोकल स्केल, local scale, ट्रांसफॉर्म डॉट. एक्चुअली यहाँ पर अपन लिख देंगे. यस, उसके अंदर थोड़ा बहुत काम बाकी है, तो मैं वो थोड़े वो फिक्सेस कर लेके उसको वीकेंड तक डालने का सोचा. स्केल, ट्रांसफॉर्म डॉट लोकल स्केल, स्केल डॉट एक्स जीरो, स्केल डॉट वाई, स्केल डॉट जेड. और यहाँ पर पब्लिक फ्लोट y scale. If it's growing, then y scale plus equal time dot delta time into grow rate. Y scale, local scale is equal new vector 3. I think ये काम करना चाहिए. फाइनली बस अब एक प्लेटफॉर्म हैंडलर नहीं, ब्रिज हैंडलर में प्राइवेट ब्रिज हैंडलर is equals to spawn dot get component bridge handler. और यहाँ पर लिखना है bridge handler dot is growing is equals to true. यहाँ लिखना है equal to false. Okay, now all I have to do is bridge के अंदर ब्रिज हैंडलर डालना है. ग्रो रेट को 1 कर देंगे एंड देन इसको 0 कर देंगे. Coding, if I need to understand coding, I need to know. It's like really hard. Coding is not really that hard. Well, you need to understand logic basically, or फिर you need to know how to read code. If you know how to read code, then you will be able to do coding. ये पूरा एक्चुअली लॉजिकल स्टेटमेंट्स है. पूरा अभी जो मैं लिख रहा हूँ इसके अंदर, इट्स ऑल लॉजिकल थिंग्स दैट वी कैन डू. सो इफ यू कैन बिल्ड लॉजिक, then you can code. It is kind of hard. Game programming is also one of the most difficult kind of programming. So I won't oversell it, undersell it. कि it's very easy to do blah blah blah. But चैट जीपीटी से भी कर ले सकते हैं आराम से. मैं बस खाली मेरे को आता बोल के कर रहा हूँ मैं इतना. वरना कब का चैट जीपीटी खोल लेके पूरा कोड नहीं लिख दे सकता था प्रॉब्ली.
या कर्सर यूज करके या कुछ और यूज करके। लॉजिकल पर्सन नॉट, मतलब नॉट लॉजिकल पर्सन कैन मेक द बेस्ट गेम, वैसा नहीं है। गेम्स में लॉजिक से ज़्यादा बहुत चीज़ा, क्रिएटिविटी लगती, लॉजिक लगता, गेम डिज़ाइन लगता, बहुत सारी चीज़ें लगते हैं। बट अ गुड, अब समवन हु अंडरस्टैंड लॉजिक कैन बी अ गुड प्रोग्रामर, बट नॉट एवरी गुड लॉजिकल पर्सन कैन बी अ गुड प्रोग्रामर, ऐसा है। Almost every good programmer is a very logical. They can understand logic well, practical logic, but not every logical person can be a good programmer. वैसा है। ठीक है, अभी मैं क्या कर रहा था, मैं ये कर रहा था। ओके, आई थिंक अभी और बेटर और कुछ करेंगे इन्हें, स्पॉन भी करेगा, फिर यस ग्रो भी कर रहा हूँ उन्हें। देखो, इट इज इजी गेम डेवलपमेंट। I'm a I'm a genius. ग्रो रेट को मैं 2 कर दिया, ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू द अदर गेम। जो बनाना चालू था तो ट्वी डंडी ग्रो हो रही, स्टॉप करती रुक जा रही। अब ऑफ कोर्स गिरना भी चाहिए। यस, ये टाइम आ गया एक और एक पैकेज डालने का, कॉल्ड दो ट्वीन। और ये न्यू प्रोजेक्ट है बेसिकली, अभी थोड़ी देर पहले ये स्ट्रीम पे शुरू करा मैं ये प्रोजेक्ट। तो मेरा प्लान था कि एक्चुअली स्ट्रीम के अंदर ही जो है सो सिंपल, फर्स्ट स्ट्रीम के अंदर आई विल गेट डन विद द सिंपल गेम प्ले एंड मैकेनिक्स लॉजिक। नेक्स्ट स्ट्रीम तक होपफुली इसको ख़त्म कर देना, 2-3 स्ट्रीम्स के अंदर तो इसको ख़त्म करके पब्लिश कर देना चाह रहा हूँ मैं। बेसिकली ज़्यादा टाइम लेना नहीं चाह रहा हूँ मैं इसको बनाने के लिए। दिस गेम हैज़ ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग मतलब इल बी जस्ट अ हाइपर कैजुअल गेम, तो सेम चीज़ अगेन अगेन आगे चीज़ आते रहते, यू हैव टू मूव अहेड। आई यू टॉकिंग लाइक इन ऐप परचेजेस एंड वो सब चीज़ें अभी तो नहीं सोचा मैं, बस खाली हाई स्कोर बेस्ड सोचा मैं। What the fuck? Requires on you when it set up utility after wants to save current Unity version में क्या बोल रहे you need I think maybe ऐसा जाके reload करे तो हो जाना चाहिए। Reloading domain। mm, 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 mm.
डॉट पिन भी डाल दिया मैं। एक फाइनल चीज़ इसके अंदर, और उसमें लाइक थोड़ा थोड़ा ग्रेविटी टाइप डालना चालू था वैसे तो, कितने वक्त ठप बोल के गिरना। देखेंगे, बाद में देखेंगे उसको। ब्रिज हैंडलर डॉट फॉल, generate a method fall, public float fall angle, transform dot do rotate, rotate public vector fall angle, ड्यूरेशन टू फॉल ड्यूरेशन लिखेंगे यहाँ पर, पब्लिक फ्लोट फॉल ड्यूरेशन, पब्लिक is curve, ओके। ब्रिज खोलो और इसको ये एक्स डायरेक्शन में रोटेट होता है आई थिंक। वन में एक्स भी नहीं होता। हाँ, अच्छा सेंटर पे टू बिट जेड पे होता है। यस, जेड पे गिरना है इसको -90, -90। अभी तो लेट्स जैसे इन बाउंड्स, या इन आउट इलास्टिक, इन आउट बाउंड्स, अप्लाई अप्लाई, टू फॉल कहीं को नहीं कर रहा इन्हें। ब्रिज हैंडलर लॉग फिनिश, और वैसे यहाँ सेव नहीं करा बोल के।
Out bombs. Which? ये देखो अब गिर रहा भी उन्हें. It is exactly how I wanted it to be. Growing, growing, and falling. मस्त bouncy bouncy भी गिर रहा. I get so many ideas. Boy, oh boy. Oh shit. Plus 0.5 plus 0.2, 0.1. Oh, sorry, 0.6 of course. और इसकी हाइट वो तो है. Making buildings and all, making 3D models is a bit harder than making the thing. यूनिटी में भी थोड़े टूल्स रहते हैं जो यूज़ करके बना सकती हूँ मैं. इट्स नॉट हार्ड बट इट्स समथिंग लाइक आई गेट लेजी. आई मीन हार्ड ही बोल सकते हैं ना वे उसको. 0.2, 0.2, 0.4, 0.45, 0.5. बट अगर ये 0.2 है तो इसका डिवाइडेड बाई 2 वुड बी 0.1. तो 0.1 should be 0.4. Let's see. नहीं, आई थिंक पहले ही बेटर था. 0.5 and 0.5. नो कल कलरी खिड़की चल रही खिड़की सॉन्ग. नो आइडिया. चल रही खिड़की वो वाला बोल रहे क्या? वो तेलुगु तेलुगु वाला बोल रहे क्या? तेलुगु एक्टर का जो है वो. अच्छा, चार्ली कर्क सॉन्ग. सॉरी. गॉड डैम इट. चार्ली कर्क सॉन्ग भी निकला गया एक.
यहाँ चाली कर्क नो चाली कर्क सॉन्ग निकला आई थिंक। सुन मैं कहीं देखा था उसके ऊपर, पर मैं इग्नोर मार दिया था। मैं बोला ये क्या लेवल के। फॉलो अपने को बस इतना ही करना है कि और गिरने के बाद एक्स डायरेक्शन में क्लियर चलते हुए जाना। दे रिलीज द फॉन्ग ऑन हिम। कुछ भी। कुछ भी निकाल देते लोग। ओके। नेक्स्ट में कुछ वैसे उसको चला रहा है, कुछ कैसा चलाऊं वो सोच रहा हूँ मैं। ये करने के भी मल्टीपल वेज है, but I'm gonna use something different. I'm gonna import something. Import मतलब this is something that I wrote myself. No BS core, core में नहीं base रहता है I guess. Scripts and variables. Yes, I'm gonna add these here. Alright, thanks for dropping in, Ultimate Boy. We'll meet soon. अभी ये वाला निकाल सकते हो, इसके अंदर जरूरत तो नहीं है। हाँ मे बी बाद में काम आएगा। Variables. Bye bye. I'm gonna add a bool variable called dro dropped. This is a smart way of doing things instead of doing it manually. तो ब्रिज हैंडलर के अंदर अपन यहाँ पर डाल दे सकते हैं पब्लिक bool variable dropped dropped, and what we will do is on complete the dot set value to set value to this is what we will do। और यहाँ पर भी अपन अब एक डालेंगे
public bool variable period on perform log start drop dot set value false. This will make sure that we are getting it done after the thing is done. And here we will also add a public bro bool of dropped, and we are gonna do drop dot bro bool nahi bool where drop dot on value change that uh, action dropped drop dot on value change action dropped. So we will move to next. Public float var move distance transform dot to move x move distance dot value अभी तो बस तीन मैनुअली देंगे यहाँ पर public float move speed and your which action which handler में यहाँ पर अपन एक और एक दो public float where move distance set value y scale. Let's see if this works. Drop variable float move distance drop
Yes, I mean I have to make a few improvements here and there, but basic logic is ready. Next, I will work on the further things that I want to work on it. I think that is more than enough for now. This stream was for like 1 hour 30 minutes. Nice amount of progress being made so far. Thank you for joining the stream. I shall stream again later.